हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम फ्रॉग का सिंपलीफाइड एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से ले लेना। अभी पहले फ्रॉग का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेंगे। फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर एंड बिलोंग्स टू क्लासेस एम्फीबिया ऑफ फाइलम कर्डाटा एंड द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टाइग्रीना। यहाँ पे मैंने फ्रॉग का क्लासिफिकेशन लिख रखी हूँ, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, जिनस राना, स्पेसीज टाइग्रीना, ऐसे ही। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथम्स। And frog also change their color, that is called camouflage, and this protective coloration is called mimicry. During peak summer and peak winter, frogs are not spotted because they make deep burrows to live as they go into the summer sleep and winter sleep, that is estivation and hibernation. Then आते हैं morphology पे. The skin is smooth and slippery due to the presence of mucus, and the skin is always maintained in a moist condition. The color of dorsal side of body is generally olive green with dark irregular spots, but ventral side का जो skin color होता है वो uniformly pale yellow होता है. Frog never drinks water but absorb it through the skin. Body of a frog divisible into head and trunk. Above the mouth a pair of nostril also is present. इन लोगों का eyes bulged होता है and covered by a nictitating membrane that protects them while in water. एंड टिम्पनम रिसीव साउंड सिग्नल्स. एंड देन इन लोगों का दोनों लिम्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो जो हैंड लिम्स होता है वो 5 डिजिट का होता है एंड जो 4 लिम्स होता है वो 4 डिजिट का होता है. एंड हैंड लिम्स थोड़ा सा लार्जर होता है एंड मस्कुलर होता है देन 4 लिम्स. सो इसको कई कंट्री में खाया जाता है. Frog shows sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and also copulatory pad, जो कि नहीं प्रेजेंट होता है फीमेल फ्रॉग में. देन देखते हैं एनाटोमी. फ्रॉग बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम में एग्जिबिट करता है, जो कि होता है डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटोरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फ्रॉग का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शंस होता है. अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनल and digestive glands. The alimentary canal is short because frogs are carnivorous, as they do not have to digest cellulose, and hence length of intestine is reduced. Mouth open into vocal cavity, then pharynx, then esophagus, then stomach, intestine, then cloaca and cloacal opening. ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा देख लेना, क्वेश्चन में आ सकता है. तो यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको सिंपलीफाई करके लिख दी हूँ. जैसे कि लिवर 3 लोब्ड होता है, सिंथेसिस करता है बाइल, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर्स करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके फ्यूज होकर कॉमन बाइल डक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि ओपन होता है इंटेस्टाइन में. Food is captured by bile of tongue. Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juice secreted from the walls of the stomach. HCl flushed food is equal to chyme, जिसको हम chyme बोलते हैं. Finally, digestion takes place in the intestine and digested food is absorbed by the finger-like folds in inner wall of intestine called villi and microvilli. Microvilli is fold of plasma membrane and villi are arrangement of cells into finger-like projections. And the undigested solid waste passed out through the cloaca. देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और फ्रॉग्स. फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड in water by 2 different methods. In water, skin acts as aquatic respiratory organs, that is cutaneous respiration. In water, cutaneous respiration during hibernation and estivation is also cutaneous respiration. On land, cutaneous buccal cavity or pulmonary. Then आते हैं circulatory system of frog. In vascular system of frogs, well developed closed type. And there are 3 types of circulatory system. One is blood vascular system, lymphatic system, portal circulation. Blood vascular system involves heart, blood vessel and blood. The lymphatic system consists of lymph channels and lymph nodes. And heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity, and it has 3 chambers. The blood from the heart is carried out all parts of the body by the arteries. Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system and the latter is called renal portal system. Blood फॉर्म होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से, और जो लिम्फ होता है वो सिर्फ ब्लैक होता है
RBC और सम प्रोटीन से। फिर आते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम में। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैरिड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटोरी सिस्टम and it consists of a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a cloaca. Act as urogenital duct which opens into the cloaca. In females, the ureter and oviduct open separately into cloaca. The frog excretes urea, so it is a ureotelic animal. Excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. यहाँ पे फ्रॉग जो होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और जो टैडपोल लार्वा होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। देन देखते हैं नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी अचीव्ड बाय hormones which are secreted by endocrine glands. The prominent endocrine glands found in the frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal gland, pancreatic gland, adrenal and gonads. Brain is covered with cranium and spinal cord is protected in vertebral column. Nervous system are three types: central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दी है। फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पेयर्ड olfactory lobes, unpaired diencephalon. The medulla oblongata passes out through the foramen magnum. Frog has different type of sense organs, namely organ of touch, taste, words, smell or vision and hearing. Out of this, eyes and internal ears are well organized or developed. Rest others are poorly developed. And the ear is an organ of hearing as well as balancing. Then देखते हैं reproductive system. Frog have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organ consists of a pair of yellowish testes which are found adhered to the upper part of kidney. Vas efferentia are 10 to 12 in number that arise from testes. They enter to the kidney on the other side and opens into the Bidder's canal. Finally, it communicate with the urogenital duct that comes out of the kidney and opens into the cloaca. The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm. It is connected to vas efferentia. It opens into bidder. It again opens into ureter and then cloaca and then cloacal opening. The female reproductive organ includes a pair of ovaries. The ovaries are situated near kidney and there is no functional connection with kidney. A pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloacal separate, and a mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization is external and takes place in water. Development involves in a large stage called tadpole, and tadpole undergoes metamorphism to form adult. Frogs are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop. Frog maintain ecological balance, and also in some countries the muscular legs of frogs are used to as a food. So finally frog complete हो गया, and thank you for watching. Bye.